Hello friends, good morning to all of you. So let's start. I welcome you to all in my YouTube channel Lingua Frenglish. So in our previous video we learned about do and do not. So today what we are going to learn, we are going to learn about ismr, right? Ismr plus verb first plus ing means continuous. Right? If we talk according to grammar, so this is present continuous, right? So is am are plus V first plus ing means whenever any sentence ends with रहा है रही है जब भी हिंदी में कोई सेंटेंस वो खत्म होता है किससे रहा है रही है और रही है से ठीक है रहा है रही है रहे हैं राइट जस्ट लुक नाउ रहा है रही है रही है इन द प्रेजेंट फॉर्म लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं आप वीडियो देख रहे हो मीन दैट वर्क इज गोइंग ऑन राइट नाउ वो काम अभी चल रहा है ठीक है वो काम अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में राइट मीन्स रहा है रही है इनका मतलब क्या है सिंपल लाइक कि कोई भी काम जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं आप सुन रहे हो राइट आप वीडियो देख रहे हो आप वीडियो देख रहे हो ओके सो लाइक दैट सो where we use is where we use and where we use are okay so here we use like आप वीडियो देख रहे हो you are watching the video मैं पढ़ा रहा हूं I am teaching ओके हम खेल रहे हैं राइट वी आर प्लेइंग वे सुन रहे हैं दे आर लिसनिंग टू अस ओके सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन नेक्स्ट what where we use is with he she it any name we use is with he she it or any name okay am we use with I okay. are we use with you we they plus plural noun you we they plus plural noun okay like he it she is it is okay I am you are we are they are okay you are we are they are okay like now just let's make some examples okay like मैं पढ़ा रहा हूं I am teaching okay आप खेल रहे हो you are playing वह वीडियो देख रहा है okay he is watching the video so what is there in this one like simple sentences are there okay so how we make the simple sentences okay like he is watching the video I am teaching you are playing now how we refuse अब sometime now जो what is there sometime we have to refuse also मना भी करना होता है हमें ठीक है तो मना कैसे करते हैं हम like I am not okay I am not okay you are not we are not he is not watching right you are not playing I am not teaching okay she is not listening how we make questions सबसे बड़े अरे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ठीक सामने वाले से पूछना भी होता है क्या आप टीवी देख रहे हो क्या वीडियोस देख रहे हो क्या मूवी देख रहे हो क्या आप खेल रहे हो राइट क्या वो खाना खा रहे हैं like that so when we make questions right so we just use subject before the
is same. Is a mark we use before the subject like is he. Is he. Okay. Is he playing? Is he playing? And then question mark. Is he playing? Then question mark. Are you watching TV? Then question mark. Okay. Then question mark. So like this we make the questions. Right? Like this we make questions. Like now we ask questions within WH family. Right? WH family. So when we make questions with WH family, so what we have to do? We have to use what before is. Right? Okay. Like what is he playing? What is he playing? Okay. Which game is he playing? Okay. How are you playing? How are you teaching? Understood? So what we have done in this video, what we have learned about is we first plus ing. तो ये स्पोकन इंग्लिश में हम यूज करते हैं, ठीक है। और ग्रामेटिकली देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सो मींस व्हेनेवर एनी सेंटेंस एंड्स विद रहा है, रही है, रही है, कि देयर वी यूज is mr plus first form plus ing. ये is mr plus first form plus ing. Like he is playing, she is writing a letter, I am going to Delhi, means that work is going on right now. कोई भी काम वो उसी समय चल रहा होता है, कोई भी काम उसी समय चल रहा होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं is mr plus first form plus ing, means continuing that work is going on continuously at the same time. Understood? So hope you like this video.